Hello students, in this video we are going to see our lesson number 1.4, that is story of tea. So we all know that tea is a very popular drink or beverage in all over the world. It is widely consumed beverage in the world after water. So it is the story of tea, what is the history of tea and how the tea made. That is we have to learn in this lesson. So let's start. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Perhaps many of you have guessed the answer. So writer has start this lesson with a question that can you name the most widely consumed beverage? Beverage means a liquid drink in the world after water, means जो पानी के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं ऐसा बेवरेज, ऐसा ड्रिंक कौन सा है? तो ऑब्वियसली आंसर है टी, चाय. परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस द आंसर. शायद आप में से बहुत लोगों ने आंसर गेस किया होगा. द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी. द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू with which people like to begin their day. Brew means drink made by boiling or keeping something in hot water for some time. मतलब गर्म पानी में कुछ थोड़ी देर बॉईल करके जो ड्रिंक बनाया जाता है उसे ब्रू बोला जाता है. इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर. एस्ट्रिंजेंट मीन्स शार्प. It has refreshing and sharp flavor, astringent flavor. It is actually made by brewing that it by infusing in boiling water. Brewing means infuse something in boiling water. The leaves and shoots of the plant, whose botanical name is Camellia sinensis. The botanical name of tea is, or that leaves is, the Camellia sinensis. The leaves are the first dried and cut and processed before they are packed and sold to us. Before packed and sold to us, first leaves dried and cut and then packed for the selling. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Now, the temperature and atmosphere for the tea plants. That Camellia sinensis is a evergreen plant. Evergreen means that become green all the time. Evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Tree plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soil. Means acidic soil is required, fertile soil is required for this, and these plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. It is said that the tree plant grows slowly and acquire a richer flavor at this height. Means what is the reason to grow the tree plants on the height? Because of this, that get the richer flavor. When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. और जब ये प्लांट तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ऊपर के जो 1 से 2 इंचेस के हिस्सा है उतना ही तोड़ा जाता है. दिस बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस. और इनको फ्लशेस बोला जाता है. ये जो बर्ड्स होते हैं 1 to 2 इंचेस के और लीव्स एंड बर्ड्स, इनको फ्लशेस बोला जाता है. अ न्यू फ्लशेस एपियर्स ऑन द प्लांट एवरी 7 to 10 days ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन. मीन्स जब उनका पीक करने का सीज़न होता है तो 7 से 10 दिनों में ये रेडी हो जाते हैं प्लकिंग के लिए. लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन द टी Left to grow on its own, the
tea plant may actually grow into small tree, but in all tea gardens, the plants are pruned and kept at the height of about 3 feet. ये सारे जो टी गार्डन्स होते हैं इनमें इनकी हाइट लिमिटेड रखी जाती है, वो 3 टू इट इज़ अबाउट 3 फीट वेस्ट हाइट, मतलब कमर के साइज तक ही उसकी हाइट रखी जाती है. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? उसके पीछे क्या वजह है? दैट एवरीवन शुड बी एनेबल्ड ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, मतलब ये जो उसकी प्लकिंग है वो ईजी हो जाए, इसलिए वो 3 फीट के हाइट तक ही वो जो प्लांट्स है वो रखे जाते हैं, मतलब वहाँ तक ही वो कट किए जाते हैं. द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज. जो चाय हम खरीदते हैं वो उसके लीफ साइज से क्लासिफाइड किया जाता है. अकॉर्डिंगली वी हैव आसाम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज बाय लार्जेस्ट लीव. अगर हमें आसाम टाइप का चाय चाहिए तो वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि उसके लीव जो है वो लार्जेस्ट होते हैं. चाइना टाइप कैरेक्टराइज बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स. चाइना टाइप चाय चाहिए तो उसके लीव जो है वो स्मॉल होते हैं, छोटी पत्ती वाले होते हैं. जो आसाम के है वो बड़े बड़े पत्ते वाले चाय होती है. कैम्बोर्ड कैरेक्टराइज बाय लीव ऑफ इंटरमीडिएट साइज. We have 3 very distinct and different tree growing region in India. In India, there are 3 distinct and different tree growing region. Each of these region is famous for the special type of tea it produces, and each region is special for the tea type of tea which is produced there, which are unique in taste, aroma, strength and flavor. The 3 regions are Darjeeling in northeastern India. First one is Darjeeling in northeastern India. Assam in far northeast India and Nilgiris in South India. These are the 3 regions in India: Darjeeling, Assam and Nilgiris. Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains no carbohydrates, fats or proteins. Most of the people agree that tea is a refreshing drink and they like to have that drink in the morning. It contains no carbohydrates, fats or proteins. What gives tea a special and distinctive flavor is a theanine as well as caffeine, which give the drink its stimulating quality.